Good morning, everyone, and welcome to Morning Con Call. First, we'll start with technical and derivatives update. If we see yesterday's session, FT ended on a negative note on expiry date, but if we see the range of the market was only of 100 points only. When Nifty is, if you see from past 11th November gap period, market is consolidated in a very narrow range of 100 points. So, but if we slip below 18,300 levels, then it would not be much encouraging. And if we could see index coming down to 18,200, which it is 10 EMA levels, and 18,000 could be the intermediate support for the index for the trend to be changed from positive to profit booking. But over here, if we manage to support and move higher than index taking above 18,400 levels, then we could see 18,600 levels in a short term. So overall, the setup on the longer term charts are positive and market is consolidating, which is very good for the market, and a time-based consolidation is needed after such a long move. On the sectoral front, if we see, then PSU Bank and Realty were the gainers, while the most of the sectors were the loser over the cut of 1%, like auto, consumer durables, and media. And on the Bank Nifty front, also the Bank Nifty continue to trade with a positive bias, but profit booking in the on the higher side again witnessed Bank Nifty to go and reach below 42,500 level. Yesterday, if you see, Bank Nifty had made a fresh high of 42, about 42,600 zones, but we can see an intense pressure on those levels, and that can be seen on the derivative front also. Yesterday, we could see call writing much higher at 42,600 levels, while in the Nifty also call writing was much higher at 18,400 levels. So on the derivatives front and the future side, if we see, then Nifty futures added a short position of the tune of 0.69%, while PCR is also dropping to sub below one levels. And on the Bank Nifty also, there was a long unwinding in the index after a huge positive long built up. There was long cutting in the index on a tune of 5%, and PCR also dropped from the highs of 1.4 to 1.12. And in the stock specific run, there were three shop builders basically in Aarti Industries, Metropolis, and Amara Raja Batteries, while as longs were built in Muthoot Finance, ONGC, and PNB Bank. Coming to the FI stats, if you see, FIs also, their positions are neutral. They are managing their position. They have shorted by 4,000 contracts, and they are now holding with 50,000 long contracts. And their position of long to short ratio is again 64%. And in the cash that they bought to the minor cash buying was that to the tune of 618 crores, while DI is also bought in the cash to the tune of 449 crores. We can keep stocks. Yesterday I spoke about railway stock. IRFC is also now looking good, and we can see again 8 to 10% of upside in that stock from the current moves. So any decline can be an opportunity to be bought. Second stock would be Engineers India. That is also looking with a good base, and we can see a 10 to 15 or 20% upside from here on going ahead. Currently, stock is trading near 70 or 80 odd levels. Any dip in the stock should be taken an opportunity to bought. So today we have also initiated one call, that is Tata Coffee. Tata Coffee is also had given a range breakout, so that would be a good position in the range of 225 to 228 with a stop loss of 289 with a target of 252. So overall, that's it from mine. I'll hand over to Bunty sir for research updates. Thank you. Thank you, Hitendra. Good morning, sir. Good morning, team. As the result season get over, now we will focus more on the news update. So starting with NMDC. Yesterday, NMDC has announced the cut in prices of lumpur by rupees 300 per ton to rupees 3,800 per ton. Similarly, fines also they have reduced by 300 per ton to rupees 2,610 rupees per ton respectively. Earlier, if you see in last 2 months, the prices were kept unchanged. Now, because the few of the factors like subdued domestic demand, weak response to OMC's iron ore auction, increase in imported iron ore bookings, and levied duty on steel prices has resulted in such a reduction in prices. However, this could be seen slightly negative in current quarter impact. How, but we are very much bullish or very much positive on a long-term perspective in on NMDC. Secondly, TCS. TCS has extended its existing deal with global HR services company Randstad to modernize its application on the cloud, strengthen the security posture, and accelerate its transformation journey. The deal financial were not disclosed. However, Randstad selected TCS as the strategic transformation partner in 2016 to digitize the company's sourcing solution.
During the first phase of its digital transformation, TCS drove one of the largest public cloud migration projects, then moving over 925 IT applications from over 50 legacy data centers across the world to a public cloud. In the new phase of Randstad's transformation journey, TCS will leverage its AWS capabilities for application modernization. This is very much a positive development with respect to TCS. Next is on the PVR and Inox related news. Manoj Desai, which is Executive Director of G7 Multiplex and Maratha Mandir Cinema, recently announced that they will be slashing the ticket prices of both the single screen theaters, as the management believes high ticket price is one of the reason for the failure of the Bollywood movies in the recent times. This move has been opposed by several multiplex owners who complained about the decision. Though this is slightly negative for the exhibition industry, we believe it will not have any major impact on the PVR and Inox. Why? Because PVR and Inox cater to a totally different set of viewers who can afford higher ticket prices and prefer enjoying the much better experience. So this could be a sentimentally negative. However, we remain very much bullish or positive on both the stocks and have a buy rating on PVR and Inox. Next is on the Aditya Birla Fashion and Retail. The company has said they have entered into a strategic partnership with Galleries Lafite to open luxury department stores and a dedicated e-commerce platform in India. This seems to be the positive move with respect to Aditya Birla Fashion business model. Next is on the Blue Dart Express. The company has announced that they will be there will be opening of 25 retail outlets in Tier 1 and Tier 2 cities, which is a part of its new expansion plan. So it seems to be the very much positive news for Blue Dart, as they are focusing more on the growth path or more in the expansion mode as such. Lastly, on the Ultratech Cement, the company has commenced its operation at its third white putty plant in Nathwada, that is in Rajasthan, with a capacity of 4 LMT per annum. So that seems to be the very much positive move for the Ultratech Cement, and this stock could be under the watch radar as such. That's it from my side. Over to you, Bridges, sir. Thank you, sir. Few updates from my side. Bharat Electronics has a signed MOU with Armored Vehicle Nigam Limited and Defense PSU to jointly address a domestic and export opportunity in the areas of combat vehicles, main battle tanks, infantry fighting vehicles, armed fighting vehicles, and related to system. So it has also signed an MOU with Advanced Weapons and Equipment India. So this is a positive for the BL. Next update on Fortis Healthcare. The Malaysia's IHH Healthcare Thursday said that SEBI has advised it to proceed with its stall open offer to acquire 26.1 market share in Fortis Healthcare only after obtaining an order from the Delhi High Court. So IHH Healthcare had acquired 31.1% stake in Fortis by infusing fresh capital of 4,000 crore in November 2018. The company is now waiting for the go-ahead to proceed with its stall open offer to acquire additional 26.1% stake in Fortis. Next update on Reliance Industry. As per TRAI data, telecom major Reliance Jio aced the 4G network speed chart of both average like download and upload. So despite of marginal decline in Jio's 4G speed, to 6.2 Mbps in October from 6.4 Mbps in September. So the telecom major continued to maintain its lead in this segment. Next update on Tata Motors. The Tata Motors automaker bag order of 1,000 buses from Haryana Roadways. As per this contract, Automaker said that it will supply 52 seaters fully built BS6 diesel bus in phased manner. The management said that the partnership with Haryana government will help in the offering modern public transport to the citizen of the state. Last update from my side,
said is Vedanta. So Vedanta Group informed yesterday that the company's board of directors will consider the proposal payment of a third interim dividend for the financial year 2022 to 23 in the meeting held on 22 November 2022. So company said that the record date of the purpose entitlement of equity shares set the dividend, and if declared is being fixed as a Wednesday 30th November 2022. So that's it from my end. Now I will hand over to Prabhakar sir for further research update. Thank you. Good morning, team. Ashok Leyland said it has delivered 150 trucks and buses to Tanzanian police force. With this, Tanzania police force has 625 Ashok Leyland vehicle. Company statement said. Ashok Leyland is one stock we like. Even Mahindra in automobile we like. Indian jewelry segment has grown 60% in the second quarter FY23. If we compare to pre-COVID FY20, so no, it is done by rating agency. I think jewelry segment is one which is growing, and there are a lot of talks about a lot of weddings coming. So I think Kalyan Jewelers and Titan are two stocks to watch out for. And Kalyan Jeweler is expanding in northern part of India. They are based out of south. So they are expanding in northern part of India with a franchisee model. I think that will be a re-rating candidate. So we like Kalyan Jewelers in that. Banking credit data has come till November 4th, which said that bank credit has moved higher by 17.9%. which is a fantastic growth, So banking will be a stock to watch out for, but there is a caveat. Your deposit growth is not up to the mark. No, if you want credit growth, you need deposit growth also equally. But deposit growth was 9.5%. It is moderated. So I think PSU banks will have an edge over the private banks as they have a far-reaching reach also. Branches-wise, they are in the villages and smaller cities, Tier 6, Tier 5, Tier 4 cities. Now, we like Bank of Baroda, Union Bank and Canara Bank in PSUs. I think even PNB, these will do very good. So these are stocks to concentrate. TARAI has come with one rollout. Now they are saying that KYC based caller ID system in 3 weeks will be implemented. This should be very positive for telecom industry. We have Bharti Airtel and Reliance Jio as the two major players. I think Bharti Airtel is one stock which is now regularly moving higher, making all-time high. So this is one stock to watch out for. And this will eliminate all the crank calls which we have been getting. So I think telecom is one more sector we need to watch out for. With that, over to you, Brijesh. थैंक यू सर. सो अभी हम ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं एनएमडीसी के साथ. तो एनएमडीसी ने अनाउंस किया, उन्होंने प्राइस कट किया लंप और के जो ₹3,000 टन है ₹2,3,800 पर टन. और उनके जो फाइन्स है वो भी उन्होंने रिड्यूस किया 300 रुपीस पर टन से 26 टन रेस्पेक्टिवली. ये बेसिकली उन्होंने लास्ट 2 महीने से प्राइसेस चेंज नहीं किए थे, वो अनचेंज थे. ये प्राइस कट करने का रीजन बेसिक रीजन है कि डोमेस्टिक डिमांड जो सब्ड्यूड थे और जो वीक रिस्पांस जो आ रहे थे ओएमसी आयन और ऑप्शन प्राइसेस से, तो इसके चलते हुए ये उन्होंने प्राइस कट किया. ये शॉर्ट टर्म में क्वार्टरली बेसिस पे शायद तो नेगेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे हमारा व्यू इस पे पॉजिटिव है. तो हो सकता है कि थोड़े मींस 2-3 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट बन सकता है, बट ओवरऑल ये पॉजिटिव न्यूज है आईएनएमडीसी के लिए.
और इसके बाद है अपडेट है टीसीएस के ऊपर। टीसीएस ने उन्होंने एक ग्लोबल एचआर सर्विस राइटस्टैंड के साथ उन्होंने वापस एक डील क्रैक किया। उसका डील साइज तो उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया। इस ऑलरेडी उन्होंने इनके साथ 2016 में भी एक डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम किया था कंपनी के साथ। अब फिर से उन्होंने उनके साथ टाई अप किया। तो ये जो न्यूज़ है, जो डील साइन होने का, वो पॉजिटिव डेवलपमेंट है टीसीएस के लिए। तो हम टीसीएस को इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। अगला एक अपडेट है पीवीआर और आइनॉक्स के ऊपर। तो इधर लोकली जो मनोज देसाई एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो G7 मल्टीप्लेक्स और मराठा मंदिर जो ग्रुप है उनका, तो उन्होंने बोला है कि वो जो सिनेमा के जो रेट्स है, जो टिकट के जो प्राइसेस है, वो रिड्यूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो बॉलीवुड के जो मूवीज है, वो उनके जो टिकट प्राइस वो काफी हाईली प्राइस्ड है, जिसकी वजह से उनको उतने व्यूअरशिप नहीं मिलते हैं। जबकि ओवरऑल हम देखेंगे कि इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं पीवीआर और आइनॉक्स को। हमारा ये मानना है कि पीवीआर और आइनॉक्स का जो क्लाइंट बेस है, वो उनका जो सेगमेंट है वो काफी अलग है, थोड़ा प्रीमियम है। तो वो उनको प्रीमियम पे करने में उनको डिफिकल्टी नहीं होती। तो उनका और ये न्यूज़ के साथ ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि पीवीआर और इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो हमारा ओवरऑल इसके ऊपर दोनों पीवीआर और आइनॉक्स के ऊपर बाई रेटिंग है। सेंटीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल काउंटर पीवीआर और आइनॉक्स को ज़्यादा फर्क नहीं गिनना चाहिए। अगला अपडेट है आदित्य बिरला फैशन और रिटेल के ऊपर। तो ये उन्होंने पार्टनरशिप किया है क्लैरिस लेफेलेटी के साथ, और ये उनके साथ लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर्स ओपन करेंगे और कुछ ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करेंगे। तो ये हम इसको पॉजिटिव के नजरिए से देख रहे हैं। अगला न्यूज़ है ब्लू डार्ट के ऊपर। उन्होंने ब्लू डार्ट कंपनी ने बोला कि वो 25 और आउटलेट्स ओपन करेंगे ब्लू डार्ट के, और ये टायर 1 और टायर 2 सिटीज में होगा। ये उनके एक्सपांशन के जो ऑलरेडी प्लान है उसके चलते वो बता रहे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए न्यूज़ पॉजिटिव की तरह देख सकते हैं। अल्ट्राटेक के ऊपर एक अपडेट है। तो कंपनी ने बताया कि उन्होंने थर्ड वाइट पुट्टी प्लांट जो राजस्थान नथवारा ये राजस्थान में उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये इसका कैपेसिटी 4 LMT पर एनुअल है। इसका प्रोडक्शन है। तो ये भी हमारा फंडामेंटली इस पे पॉजिटिव व्यू है, और ये न्यूज़ के चलते हमें लगता है कि ये पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। इसके बाद बीईएल के ऊपर अपडेट है। बीईएल ने साइन किया है आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड, ये जो डिफेंस के जो का है, ये इसमें वो बैंक्स, टैंक और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, इनके रिलेटेड ये उसमें ऑर्डर बुक्स मिले। तो ये बीईएल के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ रहेगा। रिलायंस का एक रिलायंस इंडस्ट्री में ट्राई का एक डेटा आया कि जो उनके जो स्पीड था, वो बेसिकली सितंबर में थोड़ा सा सितंबर और अक्टूबर का जो स्पीड के जो कनेक्टिविटी उसमें थोड़ा सा लैग देखने को मिला। बट इसके लैग के चलते हुए भी वो जियो का जो ओवरऑल मेजर डाउनलोड बोलो या फिर उनके जो सब्सक्रिप्शन है वो बड़े हैं। तो वो स्पीड स्लो होने के बावजूद जियो के सब्सक्रिप्शन बढ़े हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ होगा जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला एक अपडेट है टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स ने को 1000 बसेस के ऑर्डर मिले हरियाणा रोडवेज से। तो ये बेसिकली 52 सीटर है, डीजल के बसेस है, और ये स्टेप बाय स्टेप वो इसको फुलफिल करेंगे। तो कंपनी जो मैनेजमेंट ने बताया कि इससे वो हरियाणा के जो सिटीजन है उनको उनको उनके कंफर्ट जोन में और एक एडिशन होगा। तो टाटा मोटर्स का ये 1000 बस का एडिशन इसे पॉजिटिव न्यूज फॉर द ये टाटा मोटर्स के लिए। अगला एक अपडेट है हमारा अशोक लेलैंड के ऊपर। अशोक लेलैंड ने 150 बसेस तंजानिया पुलिस को दिया हुआ है। सो ऑलरेडी उनके पास 625 बसेस है। सो ये वैसे हम ओवरऑल अशोक लेलैंड पे हम वैसे भी बुलिश मेंटेन करके चल रहे। तो ये ऑर्डर बुक्स के चलते हमें लगता है कि इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो ये सेक्टर पे हमको एमएनएम और अशोक लेलैंड ये दोनों ही पॉजिटिव लगता है। तो हमें इस पे ध्यान रखना चाहिए।
अगला एक अपडेट है इंडियन ज्वेलरी बिजनेस के ऊपर। वो 67% का ग्रोथ देखा गया है एक क्वार्टर में। तो बेसिकली कोविड के बाद अभी जिस तरह से पूरा ओवरऑल माहौल इम्प्रूव हो रहा है और अभी जो वेडिंग सीजन वगैरह आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये सेगमेंट में आपको थोड़ा और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कल्याण ज्वेलर्स और ये टाइटन, ये दो स्टॉक्स है जो हमको अच्छा लग रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स में ये भी अपडेट है कि बेसिकली ये कल्याण ज्वेलर्स जो है वो साउथ बेस्ड है, जो इनका प्रेजेंस काफी सारे साउथ में है। तो वो शायद वो अभी फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू नॉर्थ में भी वो अपने एग्जिस्टेंस बनाने वाले। तो हम आगे देखेंगे कि शायद इसमें इनके सेल्स और ग्रोथ शायद अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो हमें ये कल्याण ज्वेलर्स, ये स्टॉक्स पे हमको ध्यान रखना चाहिए। अगला एक डेटा है अपने बैंकिंग के क्रेडिट डेटा के ऊपर। जो क्रेडिट डेटा काफी अच्छा आया है, 17.9% आया है। सो इस वजह से बैंकिंग स्टॉक डेफिनेटली पॉजिटिव रहेंगे। बस इसके चलते एक नेगेटिव न्यूज या थोड़ा दिक्कत की बात यह है कि डिपॉजिट के जो है वो इतने नहीं ग्रो हुए, जिसका परसेंटेज तो 9.5% है। तो ये जो डेटा के हिसाब से हमें ये लगता है कि इसमें जो बेनिफिट हो गया, जो पीएसयू बैंक है उनको ज्यादा बेनिफिट हो गया एज कम्पेयर टू द प्राइवेट बैंक्स। पीओसी बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, ये हमारे पिक्स है। तो इस पे हमको ध्यान रखना चाहिए। और एक ट्राई के ऊपर एक है अपडेट आया कि ट्राई ने बताया कि कॉलर आईडी वाले जो है वो इम्प्लीमेंट होगा अगले 3 से 4 हफ्ते में। तो इसके चलते आपको काफी सारे जो स्पैम कॉल्स है या फिर जो भी स्पैम मैसेजेस वगैरह जो आते हैं, ये इसमें आपको राहत मिल सकती है। तो भारती एयरटेल और रिलायंस ये दोनों ही कॉम्पिटिटर है। तो दोनों ही स्टॉक्स इसमें लगता है कि आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो टेलीकॉम एक सेक्टर है जो उसमें हमें अभी आगे चलते हुए ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे कुछ अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। So that's all from my end. So have a nice trading day. Thank you.